कर दिया मैंने। Okay, so continuing from where we left, so we're talking about कि जो given the quantity of milk जो एक goat produce करती है every day, they may not be viable as milk only animals. So separate branding, marketing goat milk, it can increase the earnings of the pastoralists, and obviously it can be an important source of income for them, which can help them to economically improve, financially improve. But some goats they will invariably end up in slaughterhouses to keep the herd viable. So एक ये भी मतलब challenge है. And apart from this, we can also look into the species of goats जो इंडिया में मिलते हैं. Apart from this, okay, it is mentioned over here. So what are the benefits of having the goat milk? So we see that even Mahatma Gandhi, he preferred goat milk and claimed that it has numerous health benefits. So we see कि जो सूरती breed of goats हैं जो उनमें फैट कंटेंट है गोट मिल्क में, इट इज अराउंड ओनली 3%. सो दिस इज सिमिलर टू द ब्रेस्ट मिल्क. इट इज हेंस इजी फॉर द ह्यूमंस टू डाइजेस्ट. सो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म में इट इज इजी टू डाइजेस्ट, एंड डॉक्टर्स आल्सो प्रिस्क्राइब द गोट मिल्क फॉर neonates if the mother is not able to breastfeed. So nutritionally also it is very rich, and it is also the reason कि जो lactose intolerant people हैं, they can also consume the goat milk without much difficulty. मतलब the people who are basically allergic to lactose जो cow and buffalo milk में रहता है, so they can also have goat milk as a replacement, as an alternative. So Oshik, what is Hezbollah? Hezbollah. Hezbollah is basically a separatist insurgent group in Lebanon. This is They, also Islamic group, yes, like we has Hamas. So this is also Islamic. This is based in. Hezbollah is basically Shia group based in Lebanon. हाँ, ठीक है. So 7 years after demonetization, the cash with the public falls to rupees 74,000 crores between April to October. So currency in circulation to the GDP ratio, it has increased in consonance with the overall economic growth. So एक ये important ratio है कि with the basically GDP ग्रोथ की वजह से वी आर सीइंग कि करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल ये जो रेशियो है दिस इज इंक्रीज्ड. So currency with the public, it declined 2.3% year on year during the April to October period 2023 for the first time after the government announced demonetization on 8th of November 2016. So उस demonetization के बाद हमें पहली बार fall देखने को मिल रहा है with the currency with the public. With the cash remaining the preferred mode of payment, currency with the public for the fortnight ended this much amount. This is rupees 32 lakh crores and decline था of around rupees 74,000 crore rupees. So why we are seeing a decline? So it is because of the RBI's decision to firstly withdraw the rupees 2000 denomination notes from the circulation. इसकी वजह से we are seeing, plus we are seeing कि जो advance filing of tax है उसकी वजह से, that is the reason. And apart from this, cash with the public, it is still higher by 78% on November. So cash with the public has shot up by 251% from rupees 9 lakh crores जो कि 2016 के टाइम पे था, and 2 weeks after rupees 500 notes they were withdrawn from the system. So मतलब after 2 weeks it shot up by 251%. So औशिक, आप demonetization के कुछ benefits बता सकते हो? Demonetization helped the government agencies to track down the shell companies that were operating in 2016-17,
and it led to the formalization of the economy because of the digitalization later on in 2016-17 with the advent of UPI and Paytm, etc. हाँ ये Third, बोलते हैं the कि hoarding of black money was under scanner after the demonetization. हम्म The Benami Properties Act and every other thing were basically used to curb the black money in the economy. हाँ, So एक तो three ब्लैक areas. मनी और जो And अ, fourth is the anti-terror element, financing of the anti-terror element, which were being done with the use of the 500 and 1000 notes. It were basically redrawn after the some time, and it led to the loss of the separatist group in Jammu Kashmir, etc. ठीक है But overall जो benefit हुआ है वो digitalization of economy हुआ हाँ अगर बोला डिजिटलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन ज्यादा हुआ है formalization. ठीक Yes. है करेंसी विद द पब्लिक इज अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग द कैश विद द बैंक्स फ्रॉम टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन सो इफ यू वांट टू बेसिकली कैलकुलेट करेंसी विद द पब्लिक तो बैंक्स के पास जितना पैसा है उसको आप माइनस कर दोगे फ्रॉम द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन सो दैट्स हाउ यू गेट इट सिंपली So what do you mean by currency in circulation? So it refers to the cash or currency जो country में circulate हो रही है in physical form which is used to conduct the transactions between consumers and businesses. So it is only in physical form को हम जो बोलते हैं that is currency in circulation. So we've been talking about कि FPIs they are still in the selling spree मतलब कि they are still exiting वो Indian market से exit कर रहे हैं अपना stocks and shares को sell करके उसकी वजह से वी आर सीइंग कि रिटेलर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है दे ऑफन गेट ट्रैप्ड एंड विद दिस वी आल्सो सी कि इंडियन रुपी के ऊपर भी प्रेशर इंक्रीज होता है इंडियन रुपी डेप्रिशिएट्स व्हेन एफपीआईज दे एग्जिट फ्रॉम इंडियन मार्केट Okay, Oshik, you can take up Financial Express newspaper now. Okay, I am sharing it or you will share. I can share it. Okay, ठीक है आप शेयर करो Now starting with the Financial Express newspaper. Stocks of coal at 82 power plant declined to critical levels. Basically, Central Electricity Authority. It is under, I think, it is a statutory body. It is under the Electricity Act 2001 and year 2. Once you can correct me. it is a So start it monitors around 182 plant which have a total capacity of 206 gigawatt. That means that stocks of coal is very critical to the energy security of India because it directly impacts 206 gigawatt of installed capacity of the power plant. And out of that, 82 unit were critical levels. Basically, the stocks were running at a very low amount. NTPC recorded this one. So, what are the problems facing by the power sectors in India, Mansi? If you can just give 2 to 3 problems. See, one is तो जो पॉलिटिकली अनाउंस की जाती है स्कीम्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी उसकी वजह से द डिस्ट्रीब्यूशन और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स हैं दे हैव टू सफर द लॉसेस सो उसकी वजह से वी आर सीइंग कि डेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स एंड ट्रांसमिशन जो करती हैं कंपनीज सो
यही है सबसे मतलब मेजर प्रॉब्लम हमारे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर। और व्हेन वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी में जो ग्रिड ट्रांसमिशन है, देयर आल्सो वी हैव टू नो डू मोर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट करना, उसमें भी काफी लाइक वी आर लैकिंग देयर एज वेल। Yes, I will add 2 to 3 points, Mansi. First of all, the issue is with the distribution companies debt and the local state government, and because there is a monopoly of the distribution companies, and there has been increase in the demand for the competitive prices among the distribution companies, so that the it will help it, or renewable sector of energy इसको बढ़ाना चाहिए. It should be increased so that the dependency on the coal reduced in the longer run. And third would be captive element that is being redrawn in the coal sector, but the competitive pricing of the coal has been very meager, and due to that the power industry has been facing the debt crisis. तो तीन एरिया की कोल का जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है, उसका दाम बढ़ते जा रहा है, और इसके कारण भी हो रहा है. जैसे 182 कोल पावर प्लांट है, इट हैज अराउंड 206 गीगावाट, एंड normative fuel stock for them is 57 million ton. India produces around 990 or 1 billion ton of coal per year. So basically we can also promote alternatives to the coal such as coke हो गया, या फिर coke biomass फायरिंग जिसको बोलते हैं, को फायरिंग ऑफ बायोमास, उसको प्रमोट कर सकते हैं टू रिड्यूस दिस इशू. Delay in project shows lack of investors' interest. In the current first half of the current financial year, project of $2.72 trillion have been completed, which is 2% higher, but 51% lower than 2020. Basically, there has been a delay in several other projects, whether it is highways or railways, etc. Export demand for lab-grown diamond. Basically, lab-grown diamond are those diamonds which are being produced in the labs. It is more sustainable, it is more green than existing diamond, because diamond industry needs a lot of large mines, and the mining of the diamond industry is not sustainable. It is very polluting for the environment. Therefore, diamond lab-grown diamond is more sustainable and investment-friendly option. और ये रिलेटिवली चीपर भी रहता है. And first of all, 75% of total export of diamonds are being cut and polished in India. Basically, diamond industry is very important, and majorly of the diamond industry resides in Surat, हाँ, Gujarat. गुजरात में. And another point is lab-grown diamond will also help in reducing the blood diamond in the market. That is, blood diamond means if you are using blood and sweat of the African people and poor people for the माइनिंग ऑफ द डायमंड्स, इसको ब्लड डायमंड बोलते हैं, तो उसका नहीं रहेगा मार्केट में. CII, Confederation of Indian Industry, have said that allow GM maize import, raise feed output. India is the fifth largest poultry meat around the world after US, China, Brazil, and Russia. Its sector has $28 billion. Basically, for importing, it is calling for import of the GM based maize as a stock, as a feed stock for the poultry. So basically, according to me, GM crop, we don't have any substantial report or studies related to the GM crop, how it will be beneficial for the
human health, or it can harm the human health in हम्म, future. तो हाँ, ये एक प्रॉपर इशू है, साइंटिफिक इसके स्टडी। कारण हुआ नहीं अभी. And first of all, high poultry feed prices, which cause 65 to 70% of the meat production. हम्म। Oh, basically poultry feed is approximately 70% of total meat production. हाँ, मतलब बहुत So ज्यादा। it will reduce with the import of GM crop, because other countries grow GM crop at a larger quantity as compared to India. तो ये इम्पैक्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म में. अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखा जाता है तो जीएम क्रॉप हो गया, हाई यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन पोल्ट्री, इट कैन इम्पैक्ट ह्यूमन. तो यहाँ पे हाँ, ये भी ठीक मेंशन भी है नहीं कि है. सीआई आल्सो रिकमेंडेड कि पोल्ट्री ऑपरेशंस बिहार में एक्सपैंड किए जाते हैं, क्योंकि बिहार में वी सी सिग्निफिकेंट मेज प्रोडक्शन, सो क्रूशियल फीड इंग्रेडिएंट भी है, तो वहाँ पे बेसिकली लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी रिड्यूस्ड, मतलब थोड़ी कमी रहेगी। Yes. It also says the report also suggested that collectivization of smallholder into cooperative, a producer company (FPI) would ensure the vaccination, feed extension market, basically backward and forward linkage in a हम्म। higher rate. हम्म। Avian influenza, it is a disease which affects the poultry industry, and for that vaccination is important. To enhance the disease control in poultry, a report or strengthening of the integrated disease surveillance and early warning system. So all these things are being recommended by CIA to make poultry sector a viable sector in coming decade. It is around $28 billion in 2022. Mansi, this is important or not, according to you? ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल गारंटर्स अंडर द आईबीसी, मतलब नॉट दैट इम्पोर्टेंट, पर इसको हम ले सकते हैं। आप इसको ले एक बार. ओके, हम यहाँ पे। आईबीसी तो हम्म। बताता है कि इंसॉल्वेंसी के लिए एक कोड बनाया गया था 2016 में. ये हाँ। कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हो एनपीए और बाकी सब, तो उसके. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट आई है, हु रिसेंटली अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आईबीसी के जो प्रोविजंस ऑन पर्सनल गारंटर्स ड्यूरिंग दिस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सो इसको चैलेंज किया गया था फॉर द आर्बिट्रेरीनेस एंड वॉयलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द प्रोविजंस व्हिच आर अ पार्ट ऑफ आईबीसी। सो प्रोविजंस क्या है? 2019 में आईबीसी को अमेंड करके this was introduced to allow the initiation of insolvency proceedings against even the personal guarantors also. Basically, these are the individuals जो provide करते हैं as a surety under a contract of guarantee to the corporate debtors under the laws ambit. So basically guarantee provide करते हैं जिसको हम बोलते हैं often like collateral भी बोला जाता है. So उसके अगेंस्ट भी आप बेसिकली इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हो. सो दिस इज नॉट आर्बिट्रेरी, एंड दिस वुड ऑल्सो अलाउ क्रेडिटर्स टू मतलब इंडिविजुअली और जॉइंटली भी थ्रू दी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रहता है टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स. मतलब बाकी तो प्रोसीजर सेम ही रहता है जो कंपनीज के लिए भी रहता है. बाकी यहाँ पे फैक्ट्स मेंशन है कि विद इन 10 days रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हैव टू कम टू द फाइनल डिसीजन, एंड आगे उसको रिकमेंड करना पड़ता है फॉर द अप्रूवल, जो कि आता है फ्रॉम एनसीएलटी. सो Yes. बस यही है इसमें, और तो कुछ ज़्यादा नहीं है. Deflation means negative inflation. यस, नेगेटिव. -1.2, -3 type.
practice. हाँ, मतलब प्राइस राइज नहीं होता है, एक होता है डिसइन्फ्लेशन। Disinflation. It डिसइन्फ्लेशन में is, intensity is reduced in हाँ disinflation. हाँ Intensity of the inflation is reduced. यस, बेसिकली 2 to 3 है तो 1.5 हो गया, डिसइंफ्लेशन हो गया, हाँ बट लेकिन पॉजिटिव रेट हो। है हाँ। हाँ। हाउ टू अपस्किल इन 2023 एंड बियॉन्ड। कॉर्पोरेट मस्ट इन्वेस्ट इन अपस्किलिंग। तो एक इसमें एक आइडिया था कि सीएसआर जो फंडिंग करते हैं, तो सीएसआर का फंडिंग का कुछ पार्ट हम लोग कॉर्पोरेट अपस्किलिंग में कर सकते हैं। हाँ री ऐसे इन्वेस्टमेंट। भी उनको करना ही है सीएसआर में। हाँ तो हाँ, वो इसमें भी कर सकते हैं। इनहांसिंग स्किल कोई तरीका दिया होगा तो लिखते हैं। ब्रिजिंग स्किल गैप एंड सक्सेशन प्लानिंग, नर्चरिंग इनोवेशन, मतलब यही है कि एम्प्लॉय रिटेंशन। अपस्किलिंग इनोवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयज को रिटेंशन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, एनी टाइम लर्निंग होनी चाहिए। सो डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हम बात करते हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी अपस्किलिंग इम्पोर्टेंट है। I think we finished, Mansi. Okay, so I think we are done with the day फिर, because we are not having the Hindu newspaper Hindi today. newspaper. So okay, we can close it. Thank you so much for joining Ansarkari. You can subscribe to the channel and stay tuned for everyday analysis videos. Thank you so much.